Welcome back, guys. I'm carrying a dynamics question 14, paper 2. Let's start. Question 14. The overall stopping distance of a cyclist is made up of two parts. Two parts as shown in the figure 12.1. Two part one will be thinking distance and one will be braking distance. Thinking distance will be the time in which you conceptualize what is happening. अगर आपके सामने आप गाड़ी जा रहे हो और आपके सामने एक बकरा आ जाए, आप पहले सोचोगे कि बकरा आया है, I have to stop. And then you start applying the brake. Thinking distance is the time between you start seeing the thing and you start applying the brake, right? The distance of the cyclist traveled during the reaction time of the cyclist, that is the thinking distance. The distance of the distance the cyclist travels after the brakes are applied, the braking distance. So yeah, state the energy change that occurs during the braking. Acha, during the braking, the energy change will be kinetic energy. पहले initially kinetic energy ही होती है in a moving object जिसकी कोई speed और mass हो. So that would be a kinetic energy and that will turn into frictional energy, frictional force, frictional friction आएगी and the friction will introduce the heat. Heat introduce करेगी friction, right? So those are the things. Heat, internal energy at the end. So that is the right answer. आगे करते हैं, आगे चलते हैं. B. A ball rolls in front of a cyclist at time t is equals to 0, t is equals to t 0 पे आके एक ball cyclist के सामने आती है and cyclist breaks and comes to rest. Figure 12.2 shows the speed time graph for the cyclist. पहले हम दो चीजें let's get them out of the way. Speed time graph का area under the graph gives us the distance and the gradient gives us the acceleration. You have to remember these two things in this coming question. We're going to be discussing these. Acha, question part 1. Using figure 12.2, determine the reaction time of the cyclist. Reaction time is on the x-axis. The reaction time कौन सा time होगा? Time it takes for the driver to see and take action. And as you can see, he starts to take action by the time 0.4. And before this, he was thinking because उसने जीरो पे टाइम t is equals to जीरो पे देख लिया था उस बॉल को. But the time between he sees the thing and the time between he starts to apply the brake is the reaction time, which is going to be 0.4 seconds. I hope you understood that. So 0.4 seconds. आगे. Calculate the thinking distance. Thinking distance will be ये रिएक्शन टाइम आ गया ना इसका. रिएक्शन टाइम 0.4 है, उसकी स्पीड जो है इट इज 7. रिएक्शन टाइम एंड thinking time will be the same thing, and speed is equals to speed is equals to distance divided by time. We have speed and we have time, so can't we just like straight away calculate what the distance is? Speed क्या है हमारे पास? Speed is 7. Distance क्या हमारे पास निकालना है? Distance तो अभी निकालना है. और time क्या हमारे पास? 0.4. So if we multiply 7 into 0.4, will we get the distance? Yes, we will, which is 2.8 meters per, not just meters. Yeah, my bad. State how the braking distance is found using figure 12.2. It is gonna be found using this area under the graph, under the line. ठीक है ना? This area will be found using the formula of a triangle, of a right angle triangle, which is 1 by 2 into base and into base into height, which will give us the area under the line. और braking distance ये है because here he starts to brake and here he comes to rest. ठीक है ना? So all this area will be braking distance का area, braking distance का area, and that is how you'll get braking distance. देख लेते हैं एक दफा. Sorry. Area under the graph, which is 0.4 से
2.4 तक, just like I showed you, 0.4 से 2.4 तक, and time difference into, yeah, same thing. अब हम कर लेते हैं 4. On another occasion, the same cyclist travels at an initial speed of 5 meters per second. A ball rolls in front of the cycle at time t is equals to 0. They're giving us a similar scenario, which is that the ball is coming in front of a cycle at 0 seconds. The cyclist has the same reaction time and deceleration is the same as figure 2.2. 12.2. Deceleration is the same. Everything is same but the speed, initial speed. ठीक है ना? Deceleration is same means that the gradient will be same. Right? Gradient same तभी होता है ना, जो deceleration same होती है, acceleration same होती है. तो will make a similar graph. Plot a similar graph. अच्छा, हमने पहले वो बना दिया, रिएक्शन टाइम विल बी द सेम, वाई एक्सिस पे 5 मीटर्स पर सेकंड पे हमने प्लॉट कर दिया है, ये हो गया. एंड देन वी हैव टू कीप द ग्रेडियंट सेम, सो द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, right? The lines will be parallel to each other. If the gradient is same, then the lines should be parallel to each other. And this will give us the answer. This will be the answer. 2 marks हो गए. The the braking distance is longer than when the cyclist stops at a wet road. वेट रोड पे क्यों? अच्छा, अगर आप घर से कभी बाहर निकल रहे हो, जब बारिश हुई हो और गाड़ी पे जा रहे हो आप लोग, अम्मी अबू काफी दफा कहते हैं कि आहिस्ता चलाया करो, गाड़ी आहिस्ता चलाओ, राइट? और आप भी कभी, जब फ्रिक्शन कम होती है ना, देन देयर इज मोर स्लिपेज. ठीक है ना? जब स्लिपेज ज्यादा होती है, देन इट विल टेक मोर टाइम फॉर द कार टू स्टॉप. और जब ज्यादा टाइम लगता है गाड़ी को स्टॉप करने में, और कोई इमरजेंसी आगे आ जाती है, कोई हैजर्ड आगे आ जाता है, कोई कोई मतलब सडन टर्न आगे आ जाता है, देन यू, तब ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होता है, राइट? एंड जब ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होता है, तब एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं. दैट्स व्हाई योर अम्मी अबू टेल यू टू ड्राइव सेफली, और ड्राइव अकॉर्डिंगली टू द वेदर कंडीशंस, जब बारिश हुई हो. तो दैट इज द पॉइंट. So let's see. Less friction, like I told you, less deceleration. Because of less फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन गाड़ी के बीच में और टायर के बीच में और सड़क के बीच में, वाटर एज अ लुब्रिकेंट वो यूज होता है, एज इन फॉर्म हो जाता है एज अ लुब्रिकेंट. तो देयर इज मोर चांसेस ऑफ स्लिपेज एंड एक्सीडेंट. दैट्स व्हाई यू हैव टू ड्राइव सेफली जब बारिश हुई हो. दैट्स द डिस्क्लेमर. तो या, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉयड. हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज.